Done. Fantastic. Yes. Very good morning, my dear friends. Good. Daily I was telling you good afternoon, today good morning. One day I'll tell you good evening also. And that evening class I'll tell good night also, of course. End of the class. Take anyways. We've been discussing the topic of what, my dear friends? Income from house property. We'll complete that today. Ready? Come on, my dear friends. Tell me what is section 27? Assessee. 29? 225A. 231. Percent. 234. PY. Section 3. Section 4. Chargeability section. Section 5. Scope of total income. Section 6. Residential status. बराबर है बेटा? What is section 6(1)? 6(6). Additional condition. 6(3). 6(2) and 6(6). HUF. Section 7. Income deemed to be received in India. Section 9. Deemed to occur in India. Correct, no? Section 5. Scope of total income. Very good. As per that, there are two types of income called Indian income and foreign income. Indian income, what will happen? Taxable for all. ROR, RNOR, NR, everybody is taxable. Foreign income taxable only for ROR. But we'll tax RNOR, NR in two cases. We'll tax RNOR in two cases. Number one, business income, which is controlled wholly or partly from India. Number two, professional income, which is set up in India. Correct? Yes, sir. Good. Then what is rule 7A? Rubber. What percent? 65, 35. 7B. Coffee. What are the two categories? Grown and cured. Grown, cured, roasted, grounded. Grown and cured, what is the answer? 60-40. Grown, cured, 75-25. Grown, cured, roasted, grounded, 60-40. Rule 8. Tea. Rule 7. Other than tea, coffee, rubber. Happy? So rule 8, tea, what is the percentage? 60-40. What is rule 4? Conditions for reducing unrealized rent. कल मैं आपको लिखा था क्या ये? हाँ सर. Did we write yesterday? लिखा नहीं सर, but सिर्फ mention किया. आप बस इतना बोला कि 4 कंडीशन है, बट वो लिखे नहीं. शायद हम जीए में बात करते हैं, हम क्लास क्लोज कर दें कल. हाँ, उसका बहुत कुछ कहानी बाकी है अभी. Today we have to talk about pre-construction interest. Lot of special points are there which we have to talk. Arrears of rent, unrealized rent, co-ownership. So many points are there which we'll talk now. What is section 10(1)? Agricultural income, exempt agricultural income. Agricultural income from a land in India. That is exempt. Correct? No, don't forget India here. Come on, how can you forget India? 225A. Correct? No? Yes, sir. Exactly. What is 10(7)? Allowances purchases paid by government of India to an Indian citizen who is working outside India. That will be exempt under section 10(7). दोस्तों याद है ये section? Yes, sir. Exactly, my dear friends. Then, come on. We started discussion about section 22. What is section 22? Chargeability section for house property. 23(1) computation for let out. 23(2) computation for self-occupied. In fact, that is what we are there. Yes, sir. Correct? 27 क्या है बेटा? Deemed owner. Deemed owner. यहाँ तक clear है सबको? चलो my dear friends, we have a lot of points to talk today. We'll discuss it and complete. Are we ready? Yes, sir. Let's proceed. So guys, yesterday we were talking about something called how do we do computation for let out? How do we do for self-occupied? Self-occupied क्या है बेटा starting point? NAV nil, let's directly we take 24B, definitely what we get is loss. There cannot be a positive figure in self-occupied, and that is a benefit for us because we can set off that loss with profits. And obviously when I'm giving a benefit, this will obviously carry some limits, carry some conditions. What is it? I'll teach you now. Let out, what is the starting point beta? GAV, less what? Municipal taxes paid by owner. Balance क्या आएगा बेटा? Less 24. क्या है वो? Standard deduction. 24B. Borrowed capital. Income from house property. कल लिखे ना हम लोग ये सब? याद है ना कल ये सब लिखे थे? Right. अब अपना कल GAV का भी बात हुआ, how to calculate GAV. Correct? If there is no vacancy, what is the answer? Rent for 12 months. Expected rent, rent received, whichever is
Expected rent whichever is higher. What is the expected rent? Municipal value, fair value, whichever is higher, subject to standard rent. Rent received is rent for 12 months minus unrealized rent. According to rule 4, we'll write the conditions, don't worry. Next, if there is a vacancy, beta ye ka last baat hua tha apna. I told you that calculate expected rent, calculate rent received. ये दोनों को compare करो. If rent received is greater or equal to expected rent, क्या आएगा? Rent received. But if rent received is less than expected rent, हम reason देखते हैं उसका. अगर reason vacancy है, तो GA will be rent received. Vacancy नहीं है, तो expected rent. सर बात हो गया यार. Simple सा concept था. कैसे पता लगेगा reason? We will calculate rent received if there is no vacancy. Then we will get to know if the reason is only vacancy or not. If it is only vacancy, then the rent received. Clear है बेटा? Yes, sir. Perfect. And my dear friends, we discussed very clearly that generally we say that rent received is equal to rent for 12 months minus unrealized rent. This can be reduced only when the conditions given under rule 4 are satisfied, which says number 1, tenancy is bona fide. क्या है बेटा first condition? Tenancy is bona fide. Tenancy is bona fide. Number 2, defaulting tenant has vacated or steps have been taken. Steps have been taken to compel him to vacate the property. चलो what is first condition बेटा? Tenancy is bona fide. Tenancy is bona fide. Second condition, defaulting tenant has vacated or steps have been taken to compel him to vacate the property. Condition number 3, defaulting tenant is not in occupation. Defaulting tenant is not in occupation of any other property of owner. He is not upon the property of the owner. Finally, fourth condition, owner has taken all reasonable steps to initiate क्या बेटा? Legal action or satisfies ego that legal action would be useless. ये बंदा ऑलरेडी भाग चुका है या ये बंदा कोई बड़ा डॉन है, उसको नोटिस देता हो हिल रहा नहीं है. समझ रहे बेटा? That's it. This is the story of which rule? Rule 4. It's important because unless we satisfy this condition, unrealized rent cannot be reduced. There was one time this question came in the exam where they gave unrealized rent and in the bracket they wrote no steps have been taken to make him vacate the property. Can you reduce unrealized rent? No. If you don't know the condition, our brain will start telling minus karo, minus karo, minus karo. But that's not how it works. You should satisfy the condition, only then it can be reduced. Are we getting clarity on this point, everybody? All of us? So what is section 22 beta? 23(1), commutation for let out. 23(2), commutation for self-occupied. Section 27, deemed owner. 27 is deemed owner. How many points are there in deemed owner? 5 points. कल लिखा था मैं आपको. देखो. First point, transfer to spouse or minor child other than minor married daughter. Second one, holder of impartible estate, property held by a member of society, company, etc. Fourth one, power of attorney transaction. Last one, lease for at least 12 years. याद है? वापस बोलो. Transfer to spouse or minor child other than minor married daughter. Second, holder of impartible estate, property held by member of society, company, etc. Next, power of attorney transaction. Last one, lease for at least 12 years. Months nahi dost, years. And this point will not apply if lease is for less than 1 year.
कौन सा ट्रस्ट? किधर? कैपिटल गेन्स वो तो कैपिटल गेन्स की बात कर रहे हैं आप. कैपिटल गेन्स से रोट है क्या आपका? बोलो ना क्या रोट है. मतलब बिजनेस ट्रस्ट का भी बोला था ना कि इन्वेस्ट करते हैं, करेक्ट. उस वो तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वाला है. वो भी आता है क्या? मतलब किस में? ट्रस्ट के मेंबर्स नहीं, उनको प्रॉपर्टी देते नहीं. दिस इज द केस वेयर प्रॉपर्टी इज बीइंग गिवन टू देम. इन द बिजनेस ट्रस्ट केस दे डोंट गिव प्रॉपर्टी. You got my point, everybody? Done. How many points are there in 27? 5. What is the first one? Transfer of asset to spouse or minor child other than minor married daughter. Second, holder of impartable estate. Third one, property held by member of society, company, etc. Next, power of attorney transaction. Last one, lease for at least 12 years. Clear? है? Everybody? So what are the conditions to be satisfied to reduce unrealized rent? 4 क्या है? Tenancy is bona fide. Defaulted tenant has vacated or steps have been taken to compel him to vacate the property. Third one, defaulted tenant is not in occupation of any other property of the owner. Last one, owner has taken all reasonable steps to initiate legal proceedings or satisfies AO that legal action would be useless. That's it. These are the 4 interesting conditions for reducing unrealized rent. Rick, take it. Come on, quick. Okay, beta. Come on. Which rule talks about condition for unrealized rent? Rule 4. How many are there? 4. What the first one? Tenancy is bona fide. Default tenant has vacated or steps have been taken to compel him to vacate the property. Default tenant is not in occupation of any other property of the owner. Next, owner has taken all reasonable steps to initiate legal protection or satisfies AO that legal action would be useless. Is that clear? Yes, sir. That's it. Now we learnt about how do we calculate GAV, correct? And we learnt about municipal tax 24A, NAV, 24B and all. Clear? I'll ask you one question now. Think properly and tell me. So there is one house which consists of ground floor and consists of first floor. Assume ground is self-occupied, first floor is let out. How will you do the computation?
You got my question? Part of the house is let out, part of the house is self-occupied. How will you do the computation? Okay, percentage they'll tell you in the question, don't worry. क्या करेंगे? Wonderful. We'll do computation separately for each part. Whatever municipal value, fair value, standard rent we'll got, we'll divide that into percentages. Yes or no? Yes, sir. Now I have a question, which you think properly and tell me. Imagine there is one house, okay, in which there is only ground floor. और कुछ नहीं है. Only what, sir? Ground floor. This is 7 months self-occupied. 5 months let out. Sir, this concept both are different, no? क्या फर्क है फर्स्ट केस में सेकंड केस में? फर्स्ट केस इज पार्ट ऑफ द हाउस लेट आउट, पार्ट ऑफ द हाउस सेल्फ ऑक्युपाइड. सेकंड केस इज पार्ट ऑफ द ईयर लेट आउट, पार्ट ऑफ द ईयर सेल्फ ऑक्युपाइड. क्लियर बेटा? इधर कैसा करेंगे कंपटीशन? फिर म्युनिसिपल वाले फेयर वाले कितने महीने का लेंगे? 5 महीने के लिए लेंगे. वंडरफुल. We will do computation as if it is let out. ER मतलब municipal value, fair value, whichever is subject to standard rent. ER is considered for whole year, but rent received is taken only for let out period, and then those two are compared. And logically, generally, ER will be higher because ER आप 12 महीने का ले रहे, rent ले रहे 5 महीने का. This concept is given by section 23 subsection 3. 23(1) क्या है बेटा? Let out. 23(2) क्या है बेटा? Self occupied. 23(3) part of the year is let out, part of the year is self occupied. We will do computation as if it is let out. Municipal value, fair value, standard rent will take for a whole year, but rent received will take only for let out period. समझ में आया ना बेटा? पक्का क्लियर है ना बेटा? Note, interesting concept, no doubt about it. And I'm sure this concept makes sense for all of us. पक्का no? Important. 23(3). Clear? What is 23(1)? 23(2)? And 23(2) I also told one special point. No, 23(2) में एक special point पढ़ाया था आपको. Shiva Teja having a house in Hyderabad, coming to Pune. Self-occupied also covers unoccupied property because he is residing at some other place for business or profession or employment, and in that some other place staying in rented house, and the property is unoccupied. अगर rent पे दिए तो लेके हो जाएगा. It's unoccupied. So self-occupied also covers unoccupied. याद है ना बेटा? चलो 23(3) क्या बेटा? Part of the year let out, part of the year self-occupied. We will do computation as if it is let out, and but expected rent is considered for whole year, but rent is taken only for let out period. You got my point, no? See, what happens is, if you don't have clarity on this, in exam our brain will tell expected rent also take only for 5 months, because how can you compare 12 months with 5 months? But law said that if you take 5 months and compare 5 months, concept is gone. GAV is gone. Once GAV is gone, NAV is gone. NAV is gone, house property calculation is gone. Everything is gone. Getting my point? Take it. Put heading 23(3). Title: Computation. Computation in case where property is let out for part of the year. Computation in case where property is let out for part of the year and self-occupied for part of the year. Computation in case where property is let out for part of the year and self-occupied for part of the year. नीचे लिखो बेटा. फर्स्ट पॉइंट, computation shall be done. Computation shall be done as if the property is let out.
Computation shall be done as if the property is let out. Computation shall be done as if the property is let out. But the rent received is wait. Computation shall be done as if the property is let out. Full stop. Next point, no please. But delete kar do. Next point. Expected rent is considered for a whole year. Expected rent is considered for a whole year. Expected rent is considered for a whole year, but rent received is considered only for let out period. Rent received is considered only for क्या बेटा? Let out period. I hope you're understanding बेटा. Yes, sir. सबको क्लियर है ये बात? Done, no? Next. Sir, one person, Mr. A, he has got 3 wives. Do you have any problem? Right. He has got house 1, house 2, house 3. एक जगह पे 2 दिन स्टे करता है. 2 days at house 1, 2 days at house 2, 2 days at house 3. अब एक दिन रेस्ट यार हाथ में को मारेंगे क्या पकड़ के अभी. सो 2 दिन एक ही घर पे. ऑल 3 आर एक्चुअली व्हाट? लेट आउट. ये क्या है? सेल्फ ऑक्यूपाइड. ये क्या है? ये क्या है? कैन यू हैव 3 सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउसेस लाइक दिस? In fact, once upon a time they told only one can be taken as self-occupied. But 2 years back they brought amendment telling that you can have 2 self-occupied houses. And if you have more than 2 self-occupied houses, only 2 are considered as self-occupied. Others are deemed to be let out. अगर मेरे पास 3 घर है तो मैं कैसे डिसाइड करूं कि कौन सा self-occupied लूं, कौन सा let out लूं? जो ऑप्शन लेने से टैक्स सबसे कम आता है वो बेटर ऑप्शन है. मैं आपको क्वेश्चन दूंगा जो आपको सॉल्व करना पड़ेगा. ठीक है ना बेटा? क्लियर है ना? राइट. सो हाउस 1, हाउस 2, हाउस 3. मतलब अभी नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा क्वेश्चन देने में बिकॉज कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ाने का आपको. क्लियर? सो हु टोल्ड दैट टेक ओनली से 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड? See, only 2 are self occupied, others are deemed to be let out. You told that statement, no? Who told that? Amendment. कौन सा सेक्शन? Income Tax Act. Wow, smart answer. 23(4). तो समझ में आया क्या? 23(4) says if a person has got more than 2 self-occupied houses, only 2 are considered as self-occupied. Others are deemed to be. लिखो. And this benefit of this self-occupied story is only for individual or HUF. Company cannot tell self-occupied. Hello. Yes, sir. Write down. Section 23(4) side heading लिखो. If an individual or HUF has more than 2 self-occupied houses, if an individual or HUF has more than 2 self-occupied houses, then only 2 can be considered as self-occupied. Then only 2 can be considered as self-occupied. Then only 2 can be considered as self-occupied. And others are, only 2 can be considered as self-occupied. And others are deemed to be let out. So have we done? Everybody? All of us? Yes, sir. Perfect. Next.
Sir, I have a question. Think properly and tell me. Okay? Sir, there is somebody called Rohan Builders. Builders means? They are constructing properties, societies, apartments and all. This Rohan Builders constructed an apartment. Sir, I'll tell one point, think properly and tell me. For Shivateja, if I buy one flat, that flat is a asset for me. But that flat is a stock in trade for Rohan Builders. Do you agree to that? Yes, sir. Obviously, because for them, that building is only their stock. Friends, they constructed an apartment in which there are 10 flats. 10 flats. And I hope you guys already heard very clearly that whenever we are constructing an apartment, we get something called certificate of. आप बिल्डर है, मैंने आपके पास आया, आपसे मैंने फ्लैट खरीदा है, उसी से पहले खरीद लिया, ठीक है, 1 करोड़ रुपए में लिया है फ्लैट, करोड़ रुपए में 30 लाख रुपए उसी से पहले पे किया, 70 लाख रुपए उसी के बाद पे किया, 30 लाख रुपए उसी से पहले, 70 लाख रुपए उसी के बाद. पहला क्वेश्चन, जीएसटी लगेगा क्या? बोला ना ऑलरेडी, सर्टिफिकेट मिल गया. ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मतलब क्या? ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, कंप्लीशन सर्टिफिकेट, बोथ आर वन एंड द सेम. मैंने बुक किया फ्लैट आपके पास, ठीक है, आपको सर्टिफिकेट आने से पहले ही बुक किया मैंने, करोड़ रुपए पे अपने दोनों की बात हुई, 30 लाख रुपए मैं आपको ओसी से पहले दे चुका हूं, सर्टिफिकेट से पहले, 70 लाख रुपए ओसी के बाद दिया मैंने. तो माई क्वेश्चन इज, विल जीएसटी अप्लाई? इफ यस, ऑन व्हाट वैल्यू? इफ नो, देन व्हाई? पूरे 1 करोड़ पे लगेगा जीएसटी, 1 करोड़ पे. पूरा 1 करोड़ पे जीएसटी लगेगा? 1 करोड़ पे लगेगा. फाइनल पेमेंट? नहीं, वो गलत बात है, वो तो टाइम ऑफ सप्लाई डिपेंड करता है. शायद अगर आपने 1 रुपए भी पहले दिया तो भी पूरा ही लगेगा. Good, perfect answer. The point is very simple that even if a single rupee is paid before OC, GST will apply on the entire value. That is about GST story. Good, very good, Adit. Now coming back to my discussion, that when I talk about certificate of completion of construction, this certificate of completion of construction is given by competent authority. Sir, the certificate of completion is known as CC, also called as OC. CC, OC एक ही होता है यार, completion certificate और occupancy certificate. बराबर है ना यार? ये भाई साहब ने कितने फ्लैट बनाया? ठीक है, और इसका सीन क्या है सुनो. 8 फ्लैट्स आर सोल्ड, मतलब 8 स्टॉक खत्म हो गया, बट 2 फ्लैट्स, 2 स्टॉक नहीं, 2 फ्लैट्स आर अनसोल्ड. बट इसको बेचने का है, इसको बेचने का है, पर वो बेच नहीं पा रहा है. अब क्यों? मतलब कुछ भी रीजन हो सकता है. शायद कोई फ्लैट अच्छा है, कोई बंदा आया देखने के लिए, वाओ मस्त है, पंडित को लेके आया, पंडित बोले ये तू लिया तो तू गया. In India we believe too much of Vastu principles, logics and all, no? Now tell me, 2 flats are unsold. Now the 2 flats which are unsold, does Rohan Builder, they want to keep that flats with them? It's a stock. Definitely they want to sell. If they sell only, they'll recover their money. Sir, yes or no? Yes, sir. These 2 flats are not let out because आपको किराए पे देना ही नहीं है, हमको बेचना है भाई. यार बोलो. Yes, sir. Now I have a question. Think properly and tell me. That 8 फ्लैट जो बेच दिए वो छोड़ दो, 2 फ्लैट अनसोल्ड है, वो किसके पास है? रोहन बिल्डर्स. इज इट सेल्फ ऑक्यूपाइड? नो. इज इट लेट आउट? व्हाट विल यू डू? डीम इट टू बी Let out. लेट आउट. मेरे क्वेश्चन समझे क्या? सर 2 फ्लैट तो है ना, और मैं आपको कल एक चीज बताया था, ये हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर इतना खतरनाक है, आपको किराए नहीं भी आए तो वो लोग टैक्स करते, based on something called expected rent. Correct? No, we are not asking you to pay tax on rent what you got. We are asking you to pay tax on expected rent. So my question to you very clearly is that there are 2 flats which are unsold, which is there with Rohan Builders, which is not self-occupied by them, which is not let out by them. Then what is the tax statement we give for the 2 flats? That's my question. क्वेश्चन समझा क्या? पहले बोलो आंसर क्या है, आपको क्या लगता है?
ठीक है, जो लगता है वो बोलो ना यार, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, टैक्स नहीं करना चाहिए, क्यों? बिल्डर्स को लॉस हो गया, उनके साथ बलात्कार हो जाएगा अगर टैक्स बोलेंगे तो। अब वही बोलना चाह रहे ना, गवर्नमेंट को भी ऐसे लगा है, बेचारे बिल्ड रहे, वो बना रहे घर, उसके लिए वो स्टॉक है, अब उसको बोलेंगे टैक्स भरो, वो मर जाएगा। समझना चाहिए हमको भी, ऐसा लगा है उनको। गवर्नमेंट कभी कभी थोड़ा स्वीट होता है, उन्होंने बोला है वेरी गुड, आई विल ट्रीट एनुअल वैल्यू एज नील। एनुअल वैल्यू नील मतलब एनएवी नील ऑटोमेटिकली। खुशी की बात है ना, खुशी की बात है ना। बट आई विल ट्रीट एनुअल वैल्यू एज नील ओनली फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years from the end of financial year in which certificate of completion of construction is obtained from the competent authority. अगर आप बोलेंगे सर 3 साल हो गया, 2 साल तक तो छोड़ दिए ना, तीसरे साल से आप टैक्स पे करो, नो फीलिंग्स एंड ओनली सेक्शंस एंड सबसेक्शंस। समझ गए ना सर आप ये बात? गवर्नमेंट को भी लगा है यार ठीक है, स्टॉक है ना, बेचारा उसको बेनिफिट देते, बट उतना भी स्वीट नहीं, हम लोग 2 साल देंगे बेनिफिट। एंड दिस कॉन्सेप्ट इज गिवन बाय सेक्शन 23 सबसेक्शन 5, एंड दैट्स द एंड ऑफ सेक्शन 23. 23(1) is let out, 23(2) is self-occupied, 23(3) is part of the year let out, part of the year self-occupied. Part of the house नहीं है वो, part of the year है. 23(4) more than 2 self-occupied houses, only 2 are self-occupied, others are deemed to be let out. 23(5) house property held as stock in trade. समझ गए बेटा? That's it. That is the story of this 23(5) and the story of 23. So आप देखेंगे तो बेटा सुनो एक बार, 22 हो गया, 23 हो गया, 24A हो गया, 24B हो गया, बट इसमें बहुत कहानी बाकी है 24B में, जो अभी बोलने वाला हूं मैं। 25 बच गया, 26 बच गया, 27 तो ऑलरेडी हो चुका है। थोड़ी चीजें पढ़ना है अपने को और थोड़े क्वेश्चंस देखना है, वो देखेंगे, ठीक है ना? अभी मैं बोलूंगा, लिखो पहले, फिर आप डायग्राम लिख लेना, मेरे पे जो बोल रहा हो वो लिखो। Put side heading section 23 subsection 5. Title, you can write title, house property held as stock in trade. House property held as क्या बेटा? Stock in trade. ठीक है, लिखो। In case of house property held as stock in trade, in case of house property held as stock in trade, in case of house property held as stock in trade, comma, annual value shall be considered as nil. Annual value shall be considered as nil. Shall be considered as nil for a period of, annual value shall be considered as nil for a period of 2 years. 2 years from the end of financial year. In exam students are forgetting this word called end of financial year. आप सीधा 2 years देखेंगे तो मीनिंग गलत हो जाएगा। फर्क है ना दोनों में बेटा? Please get a clarity there. Within 2 years, sorry, for a period of 2 years from the end of financial year in which, from the end of financial year in which certificate of completion of construction, financial year in which certificate of completion of construction, certificate of completion of construction, certificate of completion of construction is obtained from the competent authority. Is that clear? Just take the diagram now.
ऑफ कंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट कब मिलता है? कंप्लीट होने के बाद। जैसे कंप्लीट होने के बाद अगर उसने 6 या 7 महीने बाद मिला सर्टिफिकेट तो उसको फायदा होगा, यही आपका बात बोल रहे हैं ना। तब से 2 साल मिलेगी। जब सर्टिफिकेट आएगा तब से देखेंगे, वही लॉजिक है। बट मैं आपको एक चीज बताता हूँ सर, यहाँ पे सिंस यू आस्क्ड दैट क्वेश्चन आई विल टेल। इमेजिन 10th फरवरी 22 को कंप्लीशन हो गया, हम सर्टिफिकेट आ गया समझो, तो अपन कब तक देते हैं, अपन टाइम कब तक है 31 मार्च 24 तक कुछ टैक्स नहीं आएगा उसके ऊपर जो अनसोल्ड फ्लैट है, बराबर ना। अभी मुझे बोलो, इफ आई टेक सर्टिफिकेट ऑन 10th April 22, we'll get time till 31st March 25, barabar. But just for the sake of income tax, I will not postpone my certificate because there will also be a GST impact. There is also other impacts. For a businessman, business is first, income is first, tax is next. Correct, no? Sir, I'll ask you one straight question. Assume my income is 40 lakh. Example. If I get more 20 lakhs income by doing some activity, will my brain tell शिवा मत कर यार वो काम, अगर तू करेगा 20 लाख आएगा तो 50 लाख ऊपर जाएगा, सरचार्ज आएगा, करी भी मत काम? Will my brain tell that first? First my brain will think only about income, then we'll talk about tax. कैसे बचना बाद में देख लेंगे, बराबर ना यार? So we'll not play all these games only to get more time. I hope you are clear with this. Excellent. Come on guys, tell me what is section 22. Chartered section for house property. 23(1) beta. Let out property. 23(2). 23(3). Part of the year let out, part of the year is self-occupied. 23(4). More than 2 self-occupied houses. 23(5). House property held as stock in trade. 24(b) standard deduction. 24(a) standard deduction. 24(b) interest on borrowed capital. 27 deemed owner. बराबर है? Yes, sir. Now listen to some important concept. Don't try to think, just listen. Something very important. I'm talking about something called section 24(b). Beta, what does 24(b) deals with? Interest on borrowed capital. I will tell one very, very important point. Listen very clearly. I'll write that point also. This is allowed. This is allowed on accrual basis, not on payment basis. बेटा क्या लिखा मैंने, एक बार पढ़ो ना बेटा. This is allowed on what basis sir? Accrual basis, not on payment basis. क्या समझा इसमें? हाँ, पे नहीं भी किया तो भी डिडक्शन मिलेगा. अगर अक्रूवल है, पे नहीं भी किया तो डिडक्शन मिलेगा. Now I'll tell you one point, keep in mind always. Municipal tax allowed as deduction on payment basis, not on accrual basis. Interest allowed as deduction on accrual basis, not on payment basis. समझ रहे आप मेरी बात? If next year municipal tax I pay now only, can I take deduction? Yes. Next year interest if I pay now, can I take deduction? No, because interest on accrual basis. Last year there was some interest which was accrued, but I forgot taking deduction. I paid now. Now I want to take deduction. Can I take? Last year you forgot, no? Slept, no? Sleep forever. सो गए ना, सो जाओ हमेशा के लिए. क्या कर रहे थे फिर? एक्ट को बराबर समझना चाहिए ना तुम. अब कैसे बोल सकते हो आप? अक्रूवल हो गया ना तो लेना पड़ेगा ना डिडक्शन फिर. तो समझ रहे? इन एग्जाम एंड टाइम क्वेश्चन हैज कम. व्हाट डिड दे से, यू नो, ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, ओ 17-18, 4-5 साल पुराना क्वेश्चन है. ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 17-18 assessee paid arrears of interest of 16-17. During 17-18 assessee paid arrears of interest of 16-17. मतलब 16-17 का इंटरेस्ट 22-17-18 में पे किया है. डिडक्शन मिलेगा नहीं मिलेगा? नहीं. क्यों? अक्रूवल बेस पे मिलना चाहिए. मतलब जब लास्ट ईयर 16-17 में आपको अक्रूव आए तभी आपको लेना चाहिए था, तो आप नहीं लिए तो मत लो यार. इमोशंस यू कीप असाइड. कौन सा समझ में आ रहा है ना? आप अक्रूवल पे लेना चाहिए था, आपको भूल गए यार, भूल जाओ हमेशा के लिए यार. So getting my point? Because interest is always allowed on accrual basis, not on payment basis. Municipal tax? Not on accrual basis.
I hope this language is clear in everybody. Done. 24B is what? Interest on borrowed capital. Sir, in interest on borrowed capital, first let me talk about let outs, self-occupied. Let out, they told in the law, no limit. Q, because we have got rent, we are paying tax on it. There is a GAV figure on it. That's why they are telling no limits. Kitna interest hai utna le lo. But for self-occupied, they told what you can claim is maximum 30,000. That's it. If it is 40,000, how much you will take? 30,000. 25,000? 25,000. क्या बेटा? 25 तो कितना लेंगे? 25. 35? 30. Yeah. But there is one more story called you can take maximum 2 lakhs if 3 conditions are satisfied. Number 1, loan is taken on or after 1499. So loan कब लिया बेटा? On or after 1499, and it is taken for the purpose of acquisition or construction. So in the question, if they give you that loan is taken for purpose of repairs, what we can take is maximum 30,000. In the question, if they tell loan is for repair, kitna lenge beta? Maximum 30,000. So what is the first condition? Come on. Loan taken on or after 14/1999, it is taken for acquisition or construction. Such acquisition or construction is completed within 5 years from end of financial year in which loan is taken, and 5 years is not a small time. 5 years from the end of financial which loan is taken. That's it. If all these 3 conditions are satisfied, only then you can take maximum 2 lakh. Any condition failed, 30,000. And these limits are only for self-occupied. If it's let out, what is the answer, beta? Very good. Sir, if Shiva Teja has got 2 houses, both are self-occupied, can I take both are self-occupied? Shiva Teja has got 2 houses, both are self-occupied. Can I have 2 self-occupied houses as per income tax? ठीक है, इसका भी लोन है, इसका भी लोन है, इसका 1.5 लाख इंटरेस्ट है, इसका 1.5 लाख इंटरेस्ट है, चलेगा ना? चलेगा, क्यों? 2 अलग अलग हाउसेस है, 2 अलग अलग 2-2 लाख है, यार बोलो ना यार, चलेगा या नहीं? Exactly, nonsense answer. Law told this limit is for both self-occupied houses together. Limit is for one or aggregate. समझ गए? आप सोचेंगे 1.5 लाख 1.5 लाख, वो 2.5 लाख के अंदर है, 2 लाख के अंदर है, ये भी 2 लाख के अंदर है. वाओ, लास्ट नो गेम्स बेटा, हम आपको सिर्फ 2 लाख ही देंगे, वो भी पूरे सेल्फ ऑक्युपाइड मिला के. क्लियर है बेटा? एवरीबॉडी, दैट्स इट. Interest story is not yet over. I need to talk about something called pre-construction interest. We'll talk. Write this first.
So done, my dear friends. So let out property, what is the limit? Logic is clear because we are paying tax on it. Sell for what is the limit maximum? 30,000. But we can take only when three conditions are satisfied. Any condition failed, again it becomes? 30,000. What are three conditions? Number one, loan is taken on or after 1/4/1999. It is taken for purpose of acquisition or construction, and it is done within a period of 5 years from the end of financial year in which loan is taken. बेटा बराबर है? सबको क्लियर है बात? Wonderful. Now listen, my dear friends. Heard of something called pre-construction interest? Yes? Can you please tell me what is pre-construction interest? Loan taken for construction. Acquisition is not covered. कंस्ट्रक्शन होने के पहले पे करना पड़ता है। अच्छा, ठीक है, ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूं, आप बोलो फिर, ठीक है? लोन टेकन ऑन 1/6/21, ठीक है? कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड ऑन 10th March 22, ठीक है ना बेटा? 10th March 22. बोलो बेटा, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या है? बोलो ना यार, कब से कब तक आएगा? अरे तब से आप बोल रहे थे ना सर, आपने लोन लिया है, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, पहले का इंटरेस्ट, बाद का इंटरेस्ट। हाँ, कंस्ट्रक्शन शुरू होने से पहले, अरे कुछ भी, कंस्ट्रक्शन शुरू होने से पहले क्या होता है यार? कंप्लीशन ही देखते हैं हम लोग। शुरू से पहले प्री कंस्ट्रक्शन बोलेंगे क्या? अरे बाप रे, प्री कंस्ट्रक्शन पोस्ट कंस्ट्रक्शन ऐसा मीनिंग है क्या? नहीं यार। नमन, क्या सेम फाइनेंशियल ईयर? ठीक है, प्री कंस्ट्रक्शन पेंटर क्या है? प्री कंस्ट्रक्शन पेंटर है क्या? वो तो बोलो मैडम। पुणे, याद नहीं है? अच्छा ठीक है, सेफ आंसर। बेटा आपके पास कुछ आंसर है क्या? नहीं है बोल रहे या कुछ है ही नहीं बोल रहे? कंफ्यूजन हो रहा है, ठीक है। वरुण भाई, सर अभी मतलब लोन लिया है बट कंप्लीट नहीं हुआ, मंथ्स में वो बहुत दुबला मिला टाइप हाँ पहली रीजन कैन आई प्रोसीड? यस सर। समझ गया मैं, मुझे कैसा पढ़ाने में समझ गया। सुनो, straight point to you. Listen to my point very clearly. Please concentrate, focus everyone. Sir, I have taken a loan on 1/4/21. When did I take a loan? 1/4/21. Property construction completed. Property construction is completed. Property construction is completed. Let's say on 10th October 22. 10th October 22. My first question to you, which financial year property got ready? 22-23. उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। स्पीक आउट बेटा। प्रॉपर्टी गॉट रेडी इन 22-23. Which financial year loan is taken? 21-22. Loan is taken in one financial year, property got ready in another financial year. बराबर या नहीं? ये 21-22 का इंटरेस्ट सबसे पहले आएगा नहीं आएगा? बैंक वाला पूछेगा नहीं पूछेगा? अपने को भरना पड़ेगा नहीं भरना पड़ेगा? भरना पड़ेगा। Are we paying the interest? We are paying the interest. Is interest accrued? Yes. Is interest paid? Yes. Very good. Is the property ready? If the property is not ready, will you do computation of house property? Bolo. When you are not doing computation of house property,
Can I take 24B deduction? No. That period interest is called pre-construction period interest. Pre-construction period is the period prior to the financial year in which property is ready. In exam, nonsense students are doing in the exam is they are writing up to 9th October pre-construction, after 10th October post-construction. उठा उठा के मारेगा इसे. नॉनसेंस है वो. You should not see date, you should see year. You're getting my point? Everybody? समझ में आए क्या? कुछ लेमैन एग्जाम्पल दूं क्या? आपको दिमाग में बैठा रहेगा हमेशा. कैसे बोलो? ठीक है यार, समझो. आफ्टरनून यू आर आउट ऑफ होम, सिटिंग इन द क्लास. ओके, योर मदर प्रिपेयर्ड बिरयानी एट होम. वाव. Your mother prepared biryani at home, but you are not able to eat that biryani because you're sitting in the class. Okay? Night you went back home. By the time night you went back home, dosa is ready. Dinner is ready. Yeah? Now tell me, will you eat dosa? Will you eat dosa or not? Yes. Definitely will eat dosa because fresh, homely made, fresh made dosa will eat. But will you also eat biryani? Speak out. Definitely yes. Or something what we missed out. You can substitute biryani with whatever you want, whichever you like. Correct, my dear friends? Yes, sir. The dinner, what you are eating at the time of dinner is called current year interest. The biryani which you are eating at the time of dinner, which you could not eat in the afternoon, is called pre-construction interest. तो कभी प्रॉब्लम जब सॉल्व करेंगे ना, करंट इंटरेस्ट भी आएगा, प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट भी आएगा, if the loan is not yet repaid. I hope concept is understood. बिरयानी तो छोड़ो, कॉन्सेप्ट है नहीं है वो बोलो. समझ गए ना? एग्जाम्पल तो ठीक ठाक ही है ना? हाँ ठीक है. Can I proceed? Now listen. How do we calculate this pre-construction period? पहले पीरियड तो समझो, फिर इंटरेस्ट देखेंगे. How do we calculate pre-construction period? Sir, सुनो. What they told in the law is, please see date of borrowing, not date of birth. Please see date of what, sir? Borrowing. Date of borrowing till the date of repayment, or date of borrowing to 31st March prior to date of completion of construction or date of acquisition, whichever is earlier. आपको 31st March लेके जाना पड़ेगा because we will not calculate pre-construction on day basis. We'll calculate on year basis. We calculate on year basis, not on day basis. समझ में आ रहा है बेटा? Any question you take with this diagram, answer can be solved. Can we look at it? I'll discuss with numbers, with the dates. ठीक है? Example 1. Date of borrowing 6/6/21. Date of completion of construction 10/10/22. Date of repayment 3/3/23. ठीक है ना? नमन बोलना बेटा, प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट क्या होगा? 6/6/21 से लेके 31st March 22. इसको लेके जाना पड़ेगा ना पीछे 31st March. यार बोलो ना यार, पीछे क्यों लेके जा रहे हैं? उसके पीछे लॉजिक भी है. क्यों लेके जा रहे? बिकॉज प्रॉपर्टी गॉट रेडी इन 22-23. सर 22-23 में प्रॉपर्टी रेडी हुआ नहीं हुआ है? विच ईयर प्रॉपर्टी गॉट रेडी, नॉट विच डे. Which year property got ready, that year interest is called current year interest. Prior to that is called pre-construction interest. इसलिए हम 31st March पीछे लेके जा रहे हैं. यार बोलो ना यार, समझ में आ रहा है बेटा? चलो नंबर नेक्स्ट, और एक एग्जांपल दूंगा नंबर, इसका भी जवाब दो मुझे. एग्जांपल 2. डेट ऑफ बोरोइंग 10/10/20. डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन 6th March 21. Date of repayment 15/5/24. बोलना ना मन, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या है?
कब से कहां तक वो डेट्स तो बोल यार. 10/10/22 31st March 20. जो नॉनसेंस है. 10th October 20 से लेके 31st March 20 पीछे जाएंगे क्या? अक्टूबर से मार्च पीछे जाते क्या कोई? अरे समझा या नहीं? सर इसको अगर पीछे लेके जा रहे आप 31st March 20 आ रहा ना बेटा, 20 या कैसा चेक करते इधर से इधर पीछे थोड़ी ना जाएंगे यार. समझ रहे आप? सर ये एग्जाम्पल में बहुत लॉजिक है. आपको लॉजिक क्या है बोलो, पीछे जाना ये सब नॉनसेंस है. जब भी आप क्वेश्चन देखते हैं आप ये देखो, विच फाइनेंशियल ईयर लोन इज टेकन? 2021. विच फाइनेंशियल ईयर प्रॉपर्टी गॉट रेडी? 2021. देयर इज नो प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट. यार बोलो ना यार. लोन कौन से फाइनेंशियल में लिया बेटा? 2021. प्रॉपर्टी रेडी कब हुआ है? 2021. प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट आएगा क्या? अरे दोनों अलग अलग साल में तभी प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट आएगा ना यार. सर आप दोपहर में घर पे बैठे, रात में भी घर पे बैठे, वो भी खाएंगे ये भी खाएंगे ना यार. प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट क्यों आएगा? प्री कंस्ट्रक्शन क्यों आएगा? जब कुछ एक ऐसा चीज है जो आप खा नहीं पा रहे बिकॉज आप थे नहीं वहां पे. यू आर गेटिंग माई पॉइंट एवरीबॉडी? स्पीक आउट. इज द कॉन्सेप्ट क्लियर? एग्जाम्पल्स क्लियर? और 2-3 एग्जाम्पल दू क्या? हाँ ठीक है, बात करते. समझ गया कितना कॉन्फिडेंटली ये बंदा बोल रहा है वरुण. यस सर, बोलो बोलो और 2-3 एग्जाम्पल दो सर. जितना एग्जाम्पल देंगे उतना अच्छा है सर. 1/4/21. डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन 6/6/22. डेट ऑफ रीपेमेंट 10th March 22. बोलो बेटा क्या है प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड? 1/4/21 to 31/3/22. 1/4/21 टू नीला. नील क्यों आएगा यार दोस्त? 3/22 सर, डेट ऑफ रीपेमेंट होगी. नहीं सर, 10th. 31st March 22 आएगा. सर बोलो ना यार. 31st March 22. 1/4/21 to 31st March 22. बट आंसर इज 10th March 22. आपको इधर देखना पड़ेगा यार. मैंने क्लियरली लिखा ना यार अभी, विच एवर इज अर्लियर. अगर रिपेमेंट हो गया तो मार्च तक इंटरेस्ट आएगा क्या यार? डालना पड़ेगा ना यार. आप किसके लिए आए मेरे पास बोलो? आपका कॉन्सेप्ट परफेक्ट हो जाए, क्लैरिटी आ जाए, जो मिसिंग है वो होना चाहिए. तो मैं तो बम फोड़ूंगा ही फोड़ूंगा, नो डाउट अबाउट इट. एक बार ऐसा क्वेश्चन दूंगा जो आपको बोलते हाँ आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा दूंगा अरे यार कुछ भी नहीं आ रहा है. जब लास्ट एंड ऑफ द डे हो जाएंगे ना, ऐसा लगता है यार ठीक है सब कुछ आ रहा है. और जो क्वेश्चन देखेंगे ना वो लगता है चुम्मा है, कुछ नहीं है इसमें, कर देंगे आराम से आंसर्स. अभी आ जाएगा ना? हाँ नेक्स्ट एग्जाम्पल 4. नहीं पूछता हूं ना, सवाल ही नहीं है सर. डीओ मीन्स नॉट डेट ऑफ बर्थ. 1/4/20. डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन 15th March 21. डेट ऑफ रीपेमेंट 6/6/20. कैलकुलेटर में करने का कुछ नहीं है. दैट्स इट. क्यों? लोन इज टेकन इन 2021, कंप्लीशन ऑल्सो डन इन 2021. जब दोनों एक ही साल में हो तो प्री कंस्ट्रक्शन आएगा क्या? नहीं. अब सीधा उसको 21 को पीछे लेके जाके 21 ओ पीछे जा रहा है, इतना सोचो मत यार. पहले लॉजिक यूज करो. ये कौन से साल में हुआ है, ये कौन से साल में हुआ है, लोन जो उस साल में लिया है, घर भी उसी साल में बन गया यार, प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट आएगा ही नहीं. आपको डेट नहीं देखना है, ईयर देखना है. मन से फर्क नहीं पड़ता. मार्च को जाना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा ना यार. यू आर गेटिंग माई पॉइंट नो? नेक्स्ट एग्जाम्पल 5 दू क्या? हाँ सर, एक सही आ गया. हाँ एक सही आ गया. हाँ एक सही आ गया, गुड. 1/4/20. डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन 31st March 21. डेट ऑफ रीपेमेंट 10/5/25. 1/4/22
31st March 21. Same year है. Last week. 2021 है. चिंता कुछ तक समझ में आया ना बेटा? Is the loan taken and property done both in same financial year? Yes sir. तो आएगा क्या प्री कंस्ट्रक्शन? तो फिर खत्म ना होगी ना बात? आई होप यू आर गेटिंग फुल क्लैरिटी नाउ. यार बोलो बेटा. Yes sir. अभी सुनो. Now listen to the whole ball story. Whole story of what is this ball game they are trying to play a game with us. Listen. Mr. A. अभी तक जो देखे आप, that was only with respect to date. How do we calculate pre-construction period? Mr. A has taken a loan of 20 lakh at the rate of 10% on 1/6/20. 1/6/20. Construction completed on 10th October 21. Loan is repaid on 31st Jan 22. 31st Jan 22. Property is 60% self-occupied and 40% let out. Small change in the question. Interest rate 12%. ठीक है बेटा? समझ में आ रहा है क्या? Yes sir. Compute deduction under section 24B for assessment year 22-23. Clear? We'll do it together. Don't worry. ठीक है? सॉल्व मत करो, आराम से बैठो. सुनो सर, समझ में आ रहा है सर? सर अभी तक जो बात करें हम सिर्फ डेट्स की बात करें. अभी हम जो देख रहे हैं सॉल्व कर रहे हैं नंबर्स के साथ. करेक्ट? 60-40 बाद में कर लेते, बट पहले कैलकुलेशन कर लेंगे, फिर 60-40 डिवाइड तो करना है अपने को. यार बोलो ना यार. सबसे पहला क्वेश्चन मेरा, ये क्वेश्चन में प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड है क्या? बोलो बेटा. है? बोल कब से कब तक है? 1/6/22. That's it. Bang on. अभी क्लैरिटी आ रहा है थोड़ा थोड़ा. नाइस. कितना है लोन? 20 लाख. सॉरी, नेक्स्ट लाइन लिखता हूं. ठीक है ना? प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट. सर दिस इज द लास्ट एग्जांपल. अभी तक जितने एग्जांपल्स है वो पूरा डेट्स के साथ था, इस बार नंबर्स के साथ दे रहा हूं मैं. प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या बेटा? 20 lakhs इंटू 12% इंटू 10/12. बराबर ना बेटा? कितना आएगा? 2,40,000 इंटू 10/12 कितना? 2 lakhs. बराबर है ना? ये क्या हो गया? प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट. उसके साथ साथ करेंट इंटरेस्ट भी आएगा. करेंट इंटरेस्ट मतलब 21-22 का इंटरेस्ट. यार बोलो ना यार. उस साल का इंटरेस्ट भी आएगा ना? अरे हम रात का जो खाना बना वो भी तो खाते ना यार. वो करेंट का इंटरेस्ट है. कितना है वो? 20 लाख इंटू 12%, 2,40,000. 2 लाख क्यों आएगा भाई? 2,40,000 आएगा ना यार. करेक्ट माय डियर फ्रेंड्स? देयरफॉर टोटल इंटरेस्ट for assessment year is equal to 2,40,000 जो करंट ईयर का है, प्लस 2 लाख जो क्या है बेटा? प्री कंस्ट्रक्शन का है, बट दैट विल डिवाइड बाय 5. Because law told very clearly that pre-construction period interest is allowed as reduction in 5 equal installments. अब रात का खाना खाएंगे ना जो फ्रेश बना है, दोपहर का बिरयानी भी खाना है ना, दोनों पूरा खाएंगे तो मर जाएंगे. पेट है क्या है वो? करेक्ट? नो, देयर इज ए वैक्यूम फॉर इट. सो लॉ इज टेलिंग अगर दोपहर का खाना मतलब बिरयानी छोड़ दो, इमेजिन इन द आफ्टरनून देयर आर कपकेक्स प्रिपेयर्ड. Cupcakes are prepared in the afternoon. Night you have some dinner. Along with the dinner, law is telling eat cupcake also, no problem.
Dinner what you're eating is your current year interest. Cupcake what you want to eat now is a pre-construction interest. But I will not allow you to eat all the cupcakes at a time. I'll allow you to eat the cupcakes only in 5 equal installments, starting from the year in which property is ready. स्टूडेंट बोल रहे हैं सर 5 साल वाले तो सुना है हमने, उतना सुने तो क्या होगा, बहुत कुछ है इसमें. अभी बोल दोस्त, आपका डाउट क्या है? सर वो फुल ईयर में इंटरेस्ट क्यों है, करंट ईयर में फुल, मतलब अपन ने रीपे तो अच्छा, रीपे कर दिए क्या अपन? ठीक है, वो माइनस करता हूं ना. रीपेड ऑन 31st December 21. ठीक है, 31st December 21. तो कितने महीने का आएगा ये? सिर्फ 9 महीने का आएगा. रिपे कर देना बेटा. यार बोलो ना यार, कितना आ गया? 1 लाख. सो व्हाट इज माय इंटरेस्ट? 1,80,000 प्लस 2 lakh divided by 5, which comes to 2,20,000. समझ गए बेटा? इसमें से सेल्फ ऑक्युपाइड हो गया, 60%, कितना आ रहा है? 132, 1,32,000. Let out 88,000. That's it. This is what is the story of this beautiful concept called pre-construction interest. Very logical, very sensible, very important. And by seeing the question, how to identify whether pre-construction interest will come or not. Logic, I told you, if the loan is taken in one financial year, property got ready in different financial year, then only there is a concept called pre-construction interest. अगर दोनों एक ही साल में हुआ है तो pre-construction interest नहीं आएगा. Pre-construction interest तभी आएगा अगर लोन एक साल में है, प्रॉपर्टी दूसरे साल में रेडी हुआ है. क्लियर है ना? Almost 5-6 examples we discussed. I think we got full clarity, everybody? Yes, sir. Done. Take it बेटा. Examples लिखना है ना आपको? हाँ, लिख लो बेटा. I'll give one question which you have to solve. Rate of acquisition. This concept of pre-construction can come for both purchase as well as construction, not for repairs and all.
So done, finish writing. ये विचवर अलवेरा का लॉजिक समझ गए ना? बिकॉज लोन रीपे करेंगे तो फिर आएगा नहीं ना कुछ. रीपे करने के बाद क्यों इंटरेस्ट आएगा? सर ये एग्जांपल के बाद सिर्फ एक वो नोट लिखा देना कि मतलब डेट्स नहीं फाइनेंशियल ईयर वो. हाँ ठीक है ना. कैन आई स्क्रॉल डाउन? यस सर. Writing. So get a clarity that don't see the date, see the year. एग्जाम्पल 4 और 5 समझ गए ना बेटा? फिफ्थ एग्जाम्पल देखो, सीधा लास्ट डे, तो फिर क्या फर्क पड़ेगा? फिर भी वही हो गया ना. Finally, sixth example or whatever it is, with all the numbers.
हो गया बेटा? चलो लिखो, क्वेश्चन लिखो. From the following information, compute deduction under section 24B. From the following information, compute deduction under section 24B for self-occupied and let out. Deduction under section 24B for self-occupied and let out. नीचे लिखो बेटा. Mr. X has taken a loan of 30 lakh at 10% per annum. At 10% per annum on 1st December 2019. 1/12/2019. Full stop. Construction is completed on 10th March 22. 10th March 22. Full stop. Loan is repaid on 30th June 21. Full stop. Property is 75% self-occupied and 25% let out. Done. हो गया, कर दो बस. Come on, 2 minutes time. Get me the answer. हो गया? Assessment at 22-23, of course. आपके एग्जाम के लिए. I gave question from your exam point of view only. वो डेट्स भी उसी हिसाब से दिया मैंने. Realized?
That's a power of concept, man. Power of concept. क्या दोस्त वरुण क्या हुआ? करो ना बेटा. मैडम पुणेकर क्या हुआ? वैसे आपका नाम क्या है? ओके फाइन. दैट्स बेटर देन पुणेकर. डन. गुड. आदित्य इज साउंडिंग कॉन्फिडेंट. लेट्स सी. चलो आदित्य देखते हैं. बेटा बोलो बेटा. प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट पीरियड क्या है बेटा? 1/12/19 वेरी गुड. दैट्स द फर्स्ट सक्सेस. करेक्ट नो? बिकॉज इधर ही क्या तो सब कुछ गया. सब बराबर है ना? परफेक्ट आंसर इट इज. चलो व्हाट इज अ प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट? 30 lakh into 10% into 4/12. अलग अलग किए क्या? 16/12. पहले 4 months लेके 1 साल लेके ऐड करो, वही आएगा ना? 16 months सीधा करो, वही आएगा ना? अलग है तो पूछो यार मेरे से. सेम ही आएगा ना? कितना आया? अरे ऑब्वियसली सेम ओनली विल कम यार. हाउ कैन डिफरेंट आंसर कम? Yes, sir. सर आपको और मुझे दोनों को मैथमेटिक्स एक ही बंदे ने सिखाए. ठीक है ना? गेट बैक प्लीज. चलो नेक्स्ट. व्हाट इज द करंट ईयर इंटरेस्ट? 30 lakhs into 10%. 3/12. स्मार्ट बॉय. देखो वी रीपेड द लोन नो. से 3 महीने का आएगा इंटरेस्ट. कितना बेटा? 90,000. करेक्ट ना? Yes, sir. यार बोलो. Yes. कितना है टोटल इंटरेस्ट? 90,000 प्लस 4 lakhs डिवाइडेड बाय 5. 5 इंस्टॉलमेंट्स डिवाइड करेंगे ना? कितना आएगा? 1 lakh. सेल्फ ऑफ पर कितना हुआ? 127. लेट आउट. क्या हुआ बेटा? हाँ वही है ना? सर मुझे मैथमेटिक्स नहीं आता यार, आप ही बोलो क्या है आंसर आपको? 75,000 ही आ रहा है. दिस वीक 75,000. कुछ भी बोल रहा है यार. सर 3 lakh into 3/12. सो 3 lakh into 1/4. 1.5 75,000. 90 कैसा है अरे भाई? अरे कुछ भी कर रहे हो यार आप. सर आप ऐसा मैथ्स पे ऐसा गड़बड़ करेंगे ना बहुत गुस्सा आता है मुझे. कैलकुलेटर रख के भी कैसा करते हैं यार गड़बड़. कितना है आंसर? 1. हाँ कितना है लेट आउट का? लेट आउट कितना है? 75%. 116 to 50. 1,16,000. सेल्फ ऑक्युपाइड. लेट आउट. 38,750. That's it. परफेक्ट. आदित्य सही है? वाह चेहरे पे खुशी है आदित्य का. अच्छा लगा सुन के देख के मेरे को. सर क्लियर है ना? एंड सर वो अगर 116 की जगह 216 आता है, we would have restricted it to 2 lakhs. If 116 would have been 216, restricted to 2 lakh. Condition satisfied हो रहा ना बेटा? Yes, sir. Loan taken on after 1/4/1999. It's done within a period of 5 years.
It's for acquisition or construction. That's it. Next. Max 2 lakh. Yeah. Sir, clear? Hai? Yes, sir. Everybody? Done. So what is section 22? 23. 1. Let out. 23. 2. 23. 3. Part of the year let out, part of the year set out. 23. 4. More than 2 self-occupied houses. 23. 5. House property held as stock in trade. 24A. 24B. Interest on borrowed capital. I will tell one point, no, listen very clearly. Section 25 says interest payable outside India. Loan बाहर से लिया हम लोग. Is not allowed as deduction unless tax is deducted at source. Is not allowed as deduction if tax is not deducted at source. And there is no person in India who may be regarded as an agent. लॉजिक सिंपल है यार. हम बार बार को पैसे दे रहे हैं, उसको टीडीएस कट नहीं करें हम, और उसका कोई एजेंट नहीं है इंडिया में, गवर्नमेंट को नुकसान होगा ना. गवर्नमेंट बोल रहा है भैया तुम तेरे को डिडक्शन नहीं देंगे, जाओ. बट द स्टोरी विल कम ओनली व्हेन इंटरेस्ट इज पेड आउटसाइड इंडिया. इफ इट्स पेड विद इन इंडिया दिस सेक्शन विल नॉट अप्लाई. एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था where they told interest is paid to B Limited, an Indian company, without deducting tax at source. Student wrote 30% is disallowed. वो PGPP, ये हाउस प्रॉपर्टी, both are not same. You don't show your PGP talent here. ठीक है ना, वो अलग सेक्शन है. Section 40 small a 1a, that is different. This is 25, this is different. Clear everybody? Yes. No emotions. Only sections and subsection. Wonderful. Legal side heading. Section 25. Interest payable outside India. Interest payable outside India is not allowed as deduction is not allowed as deduction is not allowed as deduction if tax is not deducted at source. If tax is not deducted at source and there is no person in India who may be regarded as an agent. There is no person in India who may be regarded as an agent. समझ में आया दोस्तों? Everybody? चलो बेटा बोलो सेक्शन 22, 23(1), 23(2), 23(3), part of the year let out, part of the year is self-occupied. 23(4), only 2 self-occupied houses. 23(5), 24A, style reduction. 24B, 25, interest payable outside India is not allowed as deduction if tax is not deducted at source and there is no person in India who may be regarded as an agent. So this diagram makes sense, no? Yes, मतलब देख लिया क्या इतना जल्दी? हाउस प्रॉपर्टी इंडिया में है, डीम्ड ऑक्युपेशन इन इंडिया, बाहर है पर रेंट इंडिया में आ रहा है, अगेन इंडियन इनकम.
बाहर आ रहा है फॉरेन इनकम, टैक्स ओनली फॉर ROR. पढ़े ना हम लोग? यस सर. क्या बेटा, क्या बोल रहे थे आप कुछ पूछे थे क्या? ब्रेक क्या? नहीं नहीं देंगे ना. 2-5 मिनट से थोड़ा फ्रेश. ठीक है, कोई बात नहीं, चलेगा. ये क्वेश्चन का आंसर दे दो, फिर देंगे. गेट मी आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. 5 minutes. सर वो जो ब्रोकिंग है उसको अपन मतलब मानते ही है ना कि रेंट मतलब वैसा लेके चलते हैं. क्या लेके चलते हैं? रेंट मतलब अपन पूरा कैलकुलेट. हाँ, कैलकुलेट करना ना, करना पड़ेगा ना कैलकुलेशन. डन. लास्ट 1 minute.
Enough of time taken. Tell the answer. Sorry? 91,300. Okay. क्या दोस्त क्या है आपका आंसर? 5,850. What Isha? Sir, what is the story here? There are two units, half let out, half self-occupied. Let out property is given on rent for 8,000 per month. पहले सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला कहानी क्या है बेटा? NAV nil. सिर्फ क्या लेंगे? 24B. क्या है 24B बेटा? इंटरेस्ट ऑन बाउंड कैपिटल 1200 पर मंथ. मतलब इधर कितना लेंगे हम? 600. हाफ करना पड़ेगा ना, इंटू 12, तो 7,200. सो नेगेटिव 7,200 इज माई आंसर फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड. इसमें कुछ डाउट है? खत्म हो गई बात. आंसर नहीं हुआ, सेल्फ ऑक्यूपाइड हो गया. सर इफ आई डोंट मेक यू सॉल्व दिस क्वेश्चन देन डायरेक्टली टेल कॉन्सेप्ट एंड गो, इट डोंट वर्क. प्लीज चलो. अगर ये भी कर सकते हैं, मतलब मैंने 14,400 पूरा एक ही जगह दे दिया, दूसरे में लिया ही नहीं, फिर ऐसे थोड़ी होता है, डिवाइड करना पड़ेगा ना. ऐसे कैसे कर सकते? फिर सेटअप करना पड़ता. तो ऑब्वियसली गलत है वो, पक्का मार्क्स जाएंगे. लेट आउट बोलो बेटा. एक्सपेक्टेड रेंट कितना है बेटा? 80,000. Because this or this, whichever is higher, sorry, municipal fare whichever is higher, subject to standard rent. So whichever is 180, subject to 160. So 160 का आधा लेंगे तो कितना लेंगे बेटा? 80,000. रेंट रिसीव कितना है बेटा? 72,000. So rent received, what if no vacancy? That means definitely the reason is vacancy. तो बराबर या नहीं? बोलो बेटा, मेरा GAV क्या बनेगा फिर? GAV will be 72,000 less municipal tax 4,500, balance 67,500 less 24A कितना? 250. 24B 7,200, balance 39,750. When I set off this, final answer 32. That's it. This light and water charge is irrelevant, insurance is irrelevant, repairs is irrelevant, because we are going to take standard action at the rate of 30%. When we are taking standard deduction, we cannot take light, water, repair, insurance and all. समझ में आ रहा है बेटा? आई एम श्योर यू लाइक द क्वेश्चन. वैकेंसी वाला क्या? रेंट से 72 आया ना, मतलब रेंट से एक्सपेक्टेड रेंट से कम है ना, तो what would have been rent received? There is no vacancy, 96,000. That means rent received is less than expected rent only because of vacancy. Is that correct, no? This is also same question only. Fine. ठीक है. Sir, hope we are clear with this point still now. So what is section 22? Chargeability for house property. 23(1). Let out. 23(2). 23(3). Part of the year let out, part of the year self-occupied. 23(4). More than 2 self-occupied houses. 23(5). Stock in trade. 24A. Standard action. 24B. Interest on borrowed capital. Section 25. Interest payable outside India is not allowed as deduction if tax is not deducted at source and there is no person in India who can be regarded as an agent. 27. Deemed owner. Clear? Yes, sir. Take 5 minutes break, then I'll complete. So don't take a lunch break, just take 5 minutes break. We'll complete in half an hour. Then you can have your lunch. आधे घंटे में हो जाए.
हाँ इनकम टैक्स तो 4 महीने, पूरा जीएसटी हो तो फिर 6 महीने हो जाएगा। बहुत तकलीफ होगा, बहुत डिफिकल्ट होगा। देखते हैं, न्यू सिलेबस तो आने वाला है ना, आने के बाद पूरा चेंज हो जाएगा। आपको उससे क्या फर्क पड़ेगा? क्या? न्यू सिलेबस टैक्सेशन नहीं, सब्जेक्ट्स कम हो जाएगा ना आपका। 6 हो जाएगी। तो जब ये दिन में 4 लेक्चर है, जो 3 होगा, मैं विनोद सर को सबसे पहले बोल दूंगा, सर मेरा 3 घंटे का लेक्चर 3.5 घंटा कर दो, तो रोज 1 आधी घंटा आ गया, तो मेरा ओवरऑल में 10 दिन कम होगा। ओके ना बात? तो मैं हर बार चल जाऊंगा, फिर 1 महीने के बाद आके एक बार चक्कर काट के 4-5 दिन रिविजन करूंगा, फिर जाऊंगा 3 महीने के बाद फिर एक बार आ जाऊंगा 4-5 दिन। 3 महीने में एक बार 4-5 दिन क्या फर्क पड़ेगा? दैट्स ओके नो, बट कंटिन्यूअस टाइमिंग थोड़ा कम हो जाएगा। देखते हैं, आई डोंट नो, नॉट इन आवर हैंड्स। ठीक है, चलो वो बाकी डिस्कस करते हैं बाद में, पहले खत्म करते हैं इसको। हाउस प्रॉपर्टी, यस कम ऑन, गेट बैक माय डियर फ्रेंड्स। सर दैट क्वेश्चन इज क्लियर फॉर अस नो? क्लैरिटी आया ना बेटा? डन। सर आई हैव अ क्वेश्चन which is something like this. Do you think that unfurnished house, furnished house, rent will remain same? No. क्यों? रेंट में फर्नीचर का रेंट भी है, करेक्ट है? नहीं। इफ आई गिव अ फैक्ट्री ऑन रेंट along with machines, will the rent be same like open factory? क्यों? मशीन का भी रेंट है, करेक्ट माय डियर फ्रेंड्स? दैट इज टेक्निकली कॉल्ड एज कॉम्पोजिट रेंट। कॉम्पोजिट एंड लॉ टोल्ड इफ दे आर सेपरेबल, show this under house property, show this under PGBP or other sources. Not separable, then show under PGBP or other sources. You're getting my point, everybody? Yes, sir. Speak out, beta. Yes, sir. PGBP? अगर बिजनेस एक्टिविटी तो PGBP में जाएगा, बिजनेस एक्टिविटी नहीं है तो अदर सोर्स में जाएगा। बिजनेस एक्टिविटी तभी होगा if its regularity is involved. You're getting my point, no? One of my friend actually has a stationery products manufacturing business. He has got stationery manufacturing unit, and in COVID he went into losses because school सब बंद थे, तो he completely went into losses. So after that he shut the factory, बंद कर दिया बिजनेस। उसको फर्क नहीं पड़ता, एक्चुअली खुद का ही फैक्ट्री, मतलब जमीन पूरा ओन है, पैसे तो दुनिया है, तो उसको फर्क ही नहीं पड़ा बिल्कुल। And he has given that factory on rent now, along with machines, and that fellow is paying rent of 2 lakh per month. Is that 2 lakh only for the place? Along with machine, no? It's called as a composite rent. You're getting my point, everybody? Done. Now, sir, we know something called URR, no? What is this URR? Exactly. That means what? Tenant is there, but he has not paid the rent. And if the conditions are satisfied, we will reduce unrealized rent. इतना तो अपने को पता है ना? One fine day, this fellow came back and paid us rent. For example, in 2020, there is some tenant who did not pay me 1 lakh rent. In 2022, he came back and paid. Don't ask why. किया भाई, पे किया, उसको लगा गलत कर रहा है जिंदगी में, आके पे कर दिया। या तो रात में भगवान आके बोले उसको, तो शिवा को टोपी कर दिया, जाके दे उसको पैसे, वरना तो गया। एग्जाम्पल, जो भी एग्जाम्पल समझना समझ लो, रिकवर तो हो गया ना यार। बट प्रॉब्लम सुनो इधर क्या है। 2021 में मैं वो प्रॉपर्टी बेच दिया। कॉन्सेप्ट समझे? तो मैं कब रिकवर किया पैसे? 22। वो टाइम में मैं ओनर हूं क्या? अभी बोलो मुझे, ये 1 लाख टैक्सेबल है या नहीं? ये दोनों का लॉजिक क्या था? मतलब दैट, आई मीन, योर गुड नेम सर? सिजिल, SI? CYJIL. Oh, what does that mean? Sunrise. Oh, nice. First time I'm hearing a name like this. ठीक है. Sigil, the moment I told that is it taxable or not? Of course. Head of income बाद में देख लेंगे सर, taxable तो है ही। बोलो यार, is it taxable? Yes, sir. Which head of income? Income from other sources. Wonderful. क्यों बेटा? Because he's not the owner, but law told
we will tax under house property only. This concept is given by section 25 capital A. Recovery of unrealized rent is taxable in the year of receipt, but we will not tax 1 lakh, we will allow standard deduction at the rate of 30%. And moreover, it is taxable even though assessee is not the owner in the year of recovery. आपको लॉजिक समझना पड़ेगा. ये 22 में आया है, ठीक है, but this related to what? 20. That time are you the owner? Yes, sir. That's enough. Now you are not the owner, so what? Guys, you getting my points? Yes, sir. Everybody? बेटा बोलो ना यार. अभी मुझे एक बात बोलो. I will listen to this. Sorry. Listen to this interesting concept, everybody. Sir, let's say one fellow, Mr. A, he has given a property on rent to one bank at a rent of 1 lakh per month on 1/4/21 or 1/4/20. 1/4/20. Clear, my dear friends? Subsequently, what A told to the bank is on 1/4/21, he increased the rent to 1.2 lakh per month. 1 lakh को क्या कर दिया बेटा? 1 lakh to 20,000. With effect from 1/4/20. Hey, you got the point here? Yes, sir. Rent is increased what, sir? Retrospectively. Possible? Practically we don't see much, but some crazy people only do this. Correct, my dear friends? Now what will happen? Bank will end up paying extra 20,000 per month into 12 months. Pay करना पड़ेगा ना उनको? Practically we don't see this much, but can be done. That's why they told this is called as arrears of rent. Very common thing called arrears of salary. उधर बहुत होता है. उधर very common है. Government employees को देते हैं बहुत बार retrospectively. Clear? This arrears of rent is also taxable in the year of receipt after reducing standard deduction at the rate of 30%. And this concept is given by section 25 capital A only. दोनों के लिए same section है. Clear है बेटा? Put the side heading section 25 capital A. Title. (25) capital A. Title: Treatment of arrears of rent. Treatment of arrears of rent. Treatment of arrears of rent. Treatment of arrears of rent and recovery of unrealized rent. Treatment of arrears of rent and recovery of what, sir? Unrealized rents. Underline, right below first point. They are taxable in the year of receipt. They are taxable in the year of receipt. Second point. They are taxable. They are taxable after reducing. They are taxable in the year of receipt. Second point, they are taxable after reducing standard deduction. They are taxable after reducing standard deduction at the rate of 30%. They are taxable after reducing standard deduction at the rate of what, beta? 30%. Last point. They are taxable. They are taxable even though assessee is not the owner. They are taxable even though assessee is not the owner. Even though assessee is not the owner in the year of recovery. In the year of recovery. That's it. सर क्लियर है? Yes, sir. आपको एग्जाम्पल लिखना है क्या? ठीक है, समझ गए ना कॉन्सेप्ट? तो इसमें एक डाउट है सर. बोलना बेटा. अभी ये रेंट तो उन्होंने एग्रीमेंट में फिक्स ही किया
क्या होता है कि इसलिए बोल रहा प्रैक्टिकली डिफिकल्टी है. एग्जैक्टली प्रैक्टिकली ऑलरेडी एग्रीमेंट जब साइन किया, रेट्रोस्पेक्टिव साइन करेगा तो वो देगा क्या, जूते मारेगा पकड़ के. हाँ सर एग्जैक्टली वो अभी ईयरली सी गवर्नमेंट का लॉजिक क्या है, हम ये कॉन्सेप्ट रख रहे हैं इसलिए क्योंकि अगर बाई चांस आपको मिल गया, आप ये नहीं बोलना ना कि रेट्रोस्पेक्टिव आ गया वो मेरा टैलेंट है, ही हमें टांग. सर टैक्स इज ए क्रेजी थिंग यार, वेर एवर यू गो ही विल फॉलो. फ्रेंड्स क्लियर दोस्तों? डन. नेक्स्ट सुनो भाई, हाउस 1, हाउस 2, हाउस 3, मुनिसिपल वैल्यू, फेयर वैल्यू, स्टैंडर्ड रेंट 8 लाख, 9 लाख, 7 लाख, 12 लाख, 11 lakhs, 10 lakhs, 8 lakhs, 9 lakhs, 7 lakhs. Oh sorry, सेम आ गया क्या? 14 lakhs, 16 lakh, 12 lakh. बेटा ठीक है ना? Then municipal tax 5% of municipal value, 7% of municipal value, 10% of municipal value. सर ठीक है? Interest on borrowed capital 0. ठीक है? 2,40,000 loan taken for repairs. ठीक है? Loan taken for construction and done within 5 years. 1,80,000 loan taken for repairs and done in 1 month. Wow! Do it. What you have to do, you are asking? ये भी self occupied है, ये भी self occupied है, ये भी self occupied है. Which one should I take as self occupied? Which one should I take as let out? क्वेश्चन समझ गए ना बेटा? कर पाएंगे या हम साथ में करेंगे? करेंगे ना? गुड, करो. Do it. Get me the answer, come on, 5 minutes time.
Last 2 minutes, guys. Done? Which one is best? Which one should I choose self-occupied? क्या हुआ? करे नहीं करे? हाँ? First and second self-occupied. Third one deemed to be let out. Oh. करे नहीं कैसा क्वेश्चन कभी? सेकंड और सेकंड तो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, बाकी फर्स्ट एंड थर्ड सेल्फ ऑक्यूपाइड, सेकंड डीम्ड टू बी लेट आउट. ठीक है, देखते हैं. सर प्लीज अंडरस्टैंड दैट how to solve this kind of problem is, first we will do all 3 houses computation as if they are let out, then we'll do computation as if they are self-occupied, then do my analysis. Correct है बेटा? बोलो, what is expected rent? Expected rent बोलो बेटा. हाउस 1 का, हाउस 2, हाउस 3. That is only my GAV, no? Yes, sir. Because there is no rent received at all. Yes, sir. Then less municipal tax कितना बेटा? 35,000. Municipal tax 40,000, 84,000. 40,000. 84,000. हाँ. 1,40,000. I clearly told it is a percentage of municipal value. If you do mistake in that, it is your problem. 6 lakhs, 60,000. 9 lakhs, 16. 16,000. 10 lakh, 60,000. 60,000. Less Standard. 24 है कितना बेटा? 1.98 lakh. 1,98,000. 2,74,800. Okay, 3,18,000. wonderful. 24B फर्स्ट वाला था कुछ है नहीं. सेकंड वाला 2 लाख 2 lakh. 2 lakh. कितना है? 2 लाख 40 है कुछ पर 2 lakh नहीं. 2,40,000. 2 lakh. 2,40,000. 2,40,000. 2,40,000. Because I'm doing working for let outs. House 3 कितना दिया मैंने? दिया आपने 1,88,000. जितना दिया उतना लो ना यार. यार हम लेट आउट का वर्किंग कर रहे हैं ना ये दोस्त. रिपेयर्स में भी सर कुछ नहीं होगा, मतलब जितना है उतना. लेट आउट की बात कर रहे हैं ना यार. हाँ यार बोलो यार, यस सर. बोलो आंसर क्या है लेट आउट का? सॉरी, ओके. $462 फिर 4,00,000. ओके. उतना ही है क्या? ठीक है,
अभी देखो बेटा, डोंट राइट एनीथिंग नाउ. सेल्फ ऑक्यूपाइड में क्या करेंगे हम? एनएबी नील लेंगे, लेस 24 भी, ये भी तो जीरो है. दिस फिगर आई टेक इट एज 2 लाख, दिस फिगर आई टेक इट एज 30,000. बराबर है यार? बोलो. अभी लिखो मत कुछ भी, 2 मिनट रुक जाओ आप लोग, ठीक है ना? नाउ हाउ आर वी गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? फर्स्ट ऑप्शन 1 and 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड, 3 लेट आउट. ठीक है, तो हाउस 1 का फिगर कहां से लेंगे आप? सेल्फ ऑक्यूपाइड कॉलम. हाउस 2 का फिगर कहां से लेंगे आप? सेल्फ ऑक्यूपाइड कॉलम. हाउस 3 का फिगर कहां से लेंगे आप? लेट आउट कॉलम. 5,62,000. इफेक्टिव आंसर इज 3.62 लाख. हो गया बेटा ऑप्शन 1. ऑप्शन 2 1 and 3 सेल्फ ऑक्यूपाइड, 2 लेट आउट. करेक्ट है? हाउस 1 0, हाउस 2 4,01,200, हाउस 3 30,000 नेगेटिव. कितना आ रहा है बेटा? 3,02,00,000. हो गया ना बेटा? अभी नाउ सी अगेन. ऑप्शन 3 क्या है? ऑप्शन 3 बेटा 2 and 3 सेल्फ ऑक्यूपाइड, 1 इज लेट आउट. बराबर नहीं यार? H1 का फिगर क्या है? 4,62,000. H2 का फिगर क्या है? 2 लाख नेगेटिव. H3 का फिगर क्या है? 30,000 नेगेटिव. बैलेंस 2 lakhs. My answer is option 3. 2 and 3 self occupied, 1 is let out. समझ गए? बिकॉज जिस ऑप्शन में टैक्स कमा, जिस ऑप्शन में इनकम कमा रहा है उसी में टैक्स कमाएगा ना. हो गया, खत्म कर. आई होप प्रेजेंटेशन ऑल्सो इज वेरी वेरी क्लियर, क्रिस्टल क्लियर. आप पहले पूरा लेट आउट निकालो, पूरा सेल्फ ऑक्यूपाइड निकालो, ऑप्शंस लगा दो, काम खत्म. पर जब लेट आउट कर रहे तो लिमिट्स अप्लाई मत करो, सेल्फ ऑक्यूपाइड कर रहे तो लिमिट्स अप्लाई करो. फिगर्स उठा लो, ऑप्शंस निकालो, प्रॉब्लम सॉल्व. आता है कभी कभी एग्जाम में 4 मार्क के लिए. 30,000 हो गया ना लिमिट. अरे if the 3 conditions are satisfied, only then 2 lakh will come. Loan is taken on after 1/4/1999. Second condition is what? Loan is taken for acquisition or construction. लोन किसके लिए लिए? रिपेयर के लिए लिए. अब रिपेयर के लिए तो 2 लाख आ सकता क्या? नहीं. कितना आएगा? 30,000. पर वो सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं करेंगे हम, लेट आउट में लिमिट कुछ भी नहीं आएगा, इसलिए मैंने पूरा लिया है. तो ठीक है ना बेटा? अच्छा लगा क्वेश्चन सॉल्व करके, इसलिए मैंने दिया, और कुछ नहीं. इट टेक्स 5 minutes to tell. हो गया सर क्लास, चलो खाना खाते एंजॉय करते, बट दैट्स नॉट हाउ इट इज नो, इसलिए क्वेश्चन दिया. दिस इज द बेस्ट ऑप्शन सर, दिस इज द बेस्ट ऑप्शन. पूरा लेट आउट निकालो, सेल्फ ऑक्यूपाइड निकालो, मैच कर लो. दिस इज द बेस्ट वे टू डू, बिकॉज वेयर मिस्टेक्स कैन नॉट हैपन एट ऑल. सी इफ आई ट्राई टू फाइंड ऑल्टरनेटिव सोर्स टेलिंग पहले 1 डायरेक्ट ऑप्शन सॉल्व करूंगा, मिस्टेक होने का हाई पॉसिबिलिटी होता है. दिस वे व्हेन यू गो, मिस्टेक विल नेवर हैपन. अगर ऐसा दिया ना, 4 घर का भी आंसर कर सकते हैं आप, 5 घर का भी आंसर कर सकते हैं, ऑप्शंस बढ़ेगा. बट जनरली एग्जाम में 4 घर 5 घर देते नहीं, सिर्फ 3 घर देते नॉर्मली. एग्जाम आए बहुत बार ऐसे 6 मार्क, मतलब नंबर्स आर डिफरेंट, बट नंबर्स तो मैं रैंडमली बोल दिया आपको, बट कॉन्सेप्ट तो यही है. ओह थैंक यू. सर वैसे ही करते थे ऑप्शन वाला, एक ऑप्शन ये उसके तीनों करे ऑप्शन ऐसा. नहीं, दैट इज क्रिटिकल. ये बहुत ही क्लियर है. कंफ्यूज हो जाते ऑटोमेटिकली. आई मीन देयर इज हाई पॉसिबिलिटी यू विल डू मिस्टेक. अल्टीमेटली करेक्ट आंसर आता होगा, बट रिस्क ज्यादा है ना, क्यों करो वो रिस्क? पूरा लेट आउट निकालो, पूरा सेल्फ ऑक्यूपाइड निकालो, ऑप्शन निकालो, बस. हमें लकीली ये टैबलेट भी बड़ा है, तो मेक इट एक ही पेज में कर दिया मैंने आंसर भी. ठीक है. नहीं, बट एग्जाम प्रेजेंटेशन इज द बेस्ट थिंग टू डू. इट विल बी मोर इजी एंड यू कैन नॉट डू मिस्टेक एट ऑल. जब ऑप्शन निकालेंगे, जब हाउस 1 का चाहिए उधर से उठाओ, 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड बोल रहे इधर से उठाओ,
3 लेफ्ट आउट बोल रहे हैं, इधर से उठाओ, फिगर स्टडी है ना, जब फिगर स्टडी है तो ऑप्शन 2 मिनट का काम है, बस 2 मिनट का काम है कंपेयर करना। तो आपको एक ही चीज ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं है, लेफ्ट आउट का ले लो, लिमिट अप्लाई मत करो, सेल्फ ऑपरेटर लिमिट अप्लाई करो, फिर ऑप्शंस चेक कर लो, खत्म। आपका लिखना हो गया तो मैं प्रोसीड करूंगा एक्चुअली। बेटा हो गया आपका? लिटरली वो जो पहला मेथड हम लोगों ने सीखा था उसमें 2 से 3 पेज तो जाते हैं, सर 2-3 पेज जाता है, वो एक प्रॉब्लम है, और गलत आंसर आने का भी रिस्क बहुत ज्यादा है। समझ नहीं आया था वो। पेज उसमें उल्टा नहीं जा सकते क्योंकि कॉलम वाइज करते थे, बट कंफ्यूजन बहुत हाँ, कंफ्यूजन बहुत होता है, प्रॉब्लम वो है, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। नो, उसमें गलत आंसर नहीं है का पॉइंट नहीं है, बट यू गेट कंफ्यूज्ड, पॉसिबिलिटी ऑफ मेकिंग रॉन्ग इज वेरी हाई। और पेज जाना सर उस सेंस में जैसे इतना सारा वर्क करते हैं तो रफ वर्क भी फिर होता जाता है, होते जाते रहते हैं, और गलती से इधर का फिगर उधर डाल दिया, इधर से उधर उठाए तो खत्म, खलास ना, उधर ही गया ना पूरा, ऑप्शन ही गड़बड़ हो जाते हैं। ठीक है, चलो कैन आई प्रोसीड? डन बेटा, डन 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 डन, खत्म नहीं हुआ अभी, थोड़ा सा बाकी है कहानी। 22, 23-1 let out, 23-2, 23-3 part of the year let out, part of the year self occupied, 23-4 more than 2 self occupied houses। अपन जो क्वेश्चन सॉल्व करें इसका ये वो। 23-5 हाउस प्रॉपर्टी held as stock in trade, 24A अब इसमें मैं क्या पढ़ाऊं आपको, 24B इंटरेस्ट आज पढ़ लिया हम लोग, प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट क्लैरिटी आ गई ना बेटा। 25 interest payable outside India is not allowed as deduction if tax is not deducted at source and there is no person in India who may be regarded as agent। 25A beta unrealized rent and arrears of rent, simple, taxable in the year of receipt, but will allow you to take standard deduction, but हम तभी भी टैक्स करेंगे अगर आप ओनर नहीं भी है तो। बेटा बराबर ना? 27 क्या है बेटा? बीच में एक बच गया बेटा, 26 सिंपल, को ओनरशिप, लवली कॉन्सेप्ट। I mean, Shiva Teja, frankly, till date, I don't have any property which is only on my name. है नहीं, एक प्रॉपर्टी मम्मी के साथ है, एक प्रॉपर्टी वाइफ के साथ है, एक प्रॉपर्टी पापा के साथ है। टैक्स बेनिफिट होगा इसीलिए। Co-ownership is a case where property is held by 2 or more persons jointly. ठीक है? First point they told in the law is, if the property is co-owned, first do the calculation, then divide between both of them in respective share, 60-40, 50-50, whatever ratio it is, divide between both of them. Clear? When you divide, if it's let out property, don't apply limits. If it is sell for property, what is the limit? 30,000, 2 lakh. But the limit will apply separately for each co-owner. 2 लाख दोनों को मिल जाएगा। समझ गए ना? सिंपल हो गया सेक्शन, 2-3 पॉइंट लिखते काम खत्म। समझ गए सर आप लोग? सर क्लियर है ना? अगर समझो, हाँ कमर्शियल केस में भी आता है सर, हाँ, एनी केस, फॉर एग्जाम्पल Shiva Teja and his wife together owns the property and we have taken a loan of 30 lakh rupees, interest rate 10% and it is self of property। कितना इंटरेस्ट साल का बेटा? 3 लाख। अगर मैं सिर्फ मेरे नाम पे रहता था कितना मिलता था? सिर्फ 2 लाख। अज्यूमिंग ऑल कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, कंडीशन नहीं हो तो अलग बात हो गया, सेटिस्फाइड 2 लाख ही मिलता था ना। अभी जब 50-50 शेयर है हम दोनों का, तो मुझे 1.5 लाख, वाइफ को 1.5 लाख, दोनों को 1.5 लाख अलग से मिलेगा ना यार? हो गया ना बात? क्या गवर्नमेंट ने क्यों किया है? इसमें एक कैच पॉइंट है यार, और एक बात सुनते बोलता सुनो। शिव तेजा को और एक प्रॉपर्टी है मेरी मदर के साथ, ठीक है? ये भी सेल्फ ऑक्यूपाइड है, इधर भी समझो इंटरेस्ट 3 लाख आ रहा है, तो आई विल टेक 1.5, मदर विल टेक 1.5, दिस एंड दिस कैनॉट गो मोर देन 2 लाख। तो दोनों से मतलब जो लॉजिक समझे ना, बिकॉज 2 लाख लिमिट इज फॉर ऑल सेल्फ ऑक्यूपाइड टुगेदर, बट फिर भी फायदा हो रहा है, फिर भी फायदा हो रहा है, फिर भी फायदा हो रहा है। इधर तो वाइफ एंजॉय कर रही ना यार, इधर तो मदर को आ रहा नहीं यार। अगर वो ये कॉन्सेप्ट है ही नहीं तो एक के नाम पे लेते थे ना। अरे ये बहुत प्लानिंग है यार, इसलिए मेरे खुद के नाम पे एक भी प्रॉपर्टी नहीं है।
इनफैक्ट मेरे वाइफ के साथ मेरा शादी हुआ आफ्टर दैट ओनली शी बिकेम वाइफ नो फर्स्ट ईयर ओनली वी परचेज सम प्लॉट एंड आई टुक अलॉन्ग विद माय वाइफ नेम शी फेल्ट सो हैप्पी एक्सट्रीमली हैप्पी यार मेरे पति ने मतलब शादी होके 4-5 महीने भी नहीं हुआ है मेरा भी नाम कर रहे हैं कितना अच्छा पति है उनको क्या पता वो टैक्स प्लानिंग के लिए किए उनको पता नहीं ना वो चीज बाद में समझा है उनको मैं हाँ नहीं अभी तो पता है उनको शी इज फ्रॉम दैट बीटेक साइंस बीटेक बैकग्राउंड इंजीनियरिंग बैकग्राउंड सो डजंट नो ऑल कॉमर्स ऑल दिस स्टफ so I get lot of opportunity to showcase lot of things which I do for tax benefit but she thinks I'm doing it for her benefit and love and affection बिजनेस में भी खुश घर में भी खुश अरे कितना खुश हो गए मतलब वो स्टार्टिंग में यार शी कॉल्ड हर पेरेंट्स शी कॉल्ड एवरीबडी अरे ये मेरे नाम पे प्रॉपर्टी ले रहा है मतलब सिर्फ 4-5 महीने हुआ ना यार कौन करता है वो बात 4-5 महीने की बात है शी फेल्ट सो हैप्पी देन आफ्टर 2 months आई टोल्ड हर कि इंटरेस्ट मतलब लोन लिया है कुछ 40 लाख रुपए लोन लिया है 50 लाख खुद का डाले 90 लाख का प्रॉपर्टी लिया हमने 40 लाख खुद से प्रॉपर्टी लोन ले रहा है जिसका ऑलमोस्ट 7-8% इंटरेस्ट लग रहा है 3 लाख तक इंटरेस्ट आ रहा है 2 लाख 80 इंटरेस्ट वॉज कमिंग देन आई टोल्ड हर कि ऐसा ऐसा मिलता है ऐसा ऐसा मिलता है ओ ऐसा है क्या इसके लिए क्या आप अरे नहीं बेटा ऐसे थोड़ी है यार ऐसा नहीं भी मिले तो आपके नाम पे लेता था ऐसे थोड़ी है अगले प्रॉपर्टी हम दोनों साथ में लेंगे फिर से चले को थैंक यू नहीं मालूम ना उनको अगला भी बेनिफिट मिलेगा ठीक है एनीवेज आई होप यू आर क्लियर विद दिस सिंपल sir I hope you are getting my point one time what happened 1 year after marriage anniversary my wife's father's brother उनके बड़े पापा है चाचा नहीं बड़े पापा है he loves my wife a lot actually ठीक है मैरिज एनिवर्सरी उन्होंने 1 लाख रुपीस का गिफ्ट दिया है एनिवर्सरी पे 1 लाख रुपए गिफ्ट दिया मतलब क्यों मतलब हे भाई पैसे ये दे रहे तो क्या फर्क पड़ेगा मैं थोड़ी मना करूंगा ठीक है ना यार सो माई वाइफ ही कॉल्ड माई वाइफ एंड आस्क्ड फॉर बैंक अकाउंट डिटेल्स अब बैंक अकाउंट डिटेल भेजो मैं 1 लाख ट्रांसफर करता हूँ मेरी तरफ से गिफ्ट है आपके लिए माई वाइफ आस्क्ड मी आपका अकाउंट डिटेल्स दे दो मैं दूंगा बोला तो क्या स्वीट है यार मैं भी शॉक हो गया यार मेरा नंबर अकाउंट डिटेल्स पूछ रहे हैं बोले नहीं आप ले लो बाद में मैं लूंगा अभी तो आप ले लो बाद में मैं लूंगा चाहिए तो जब लूंगा बाद में अभी तो आपका अकाउंट डिटेल्स देके आप ही मंगा लो सो लाइक ओ थैंक यू सो मच थैंक यू सो स्वीट शी फेल्ट एक्सट्रीमली हैप्पी एंड 1 लाख ट्रांसफर टू हर अकाउंट ठीक है आफ्टर दैट कुछ जरूरत था मैं बोला 1 लाख ट्रांसफर कर दो मेरे अकाउंट में कुछ पेमेंट करना है मैं कर दूंगा चलिए ठीक है यूज करना अरे वो तो कुछ पॉकेट मनी के लिए आए ना यार यूज तो करना है यार कितना बचा के रखोगे आदमी आप 2 प्रॉपर्टी 10 प्रॉपर्टी एक ही तो लाइफ तो देना एक ही तो खाना है यार सो आई टोल्ड यू टेक फर्स्ट यू टेक आपके अकाउंट में ले लो बाद में जब है तो देख लेंगे उनको पता नहीं वो डायलॉग क्यों बोला है इफ आई डायरेक्टली टेक फ्रॉम हिम ही इज नॉट माई रिलेटिव इट बिकम्स टैक्सेबल बट फॉर माई वाइफ ही इज रिलेटिव सो इफ शी टेक्स फ्रॉम हिम इट इज exempt then I will take from my wife again it is exempt under section 56 to 10 इसलिए तो ना लाख रुपए नहीं है तो 50,000 के ऊपर टैक्सेबल है हाँ बट गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव इज exempt नो सब फुल्ली एग्जेम्प्ट गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव कितना भी हो exempt है ठीक है जब जाएंगे तब डिटेल में पढ़ेंगे बट ये कॉन्सेप्ट तो सुनिए ना आप लोग मेरे चाचा मेरे रिलेटिव होते हैं मेरे वाइफ का चाचा मेरे रिलेटिव होते नहीं क्यों चाचा मेरे माई बड़े पापा इज रिलेटिव फॉर मी माई चाचा इज ऑल्सो रिलेटिव फॉर मी आई विल टॉक इन डिटेल वो मैं ऑलमोस्ट एक आधी घंटा पढ़ा तो वो चीज हाफ एन आवर 40 minutes आई टीच ओनली गिफ्ट आई टीच 1 hour डोंट वरी ठीक है ना जब तब जाएंगे तब पढ़ेंगे ठीक है ना आई जस्ट वांट टू टेल यू ओनली समथिंग दैट प्रैक्टिकली बहुत सारी चीज ऐसे हुआ मेरे साथ जो मैं कुछ कारण से किया है बट वो लव एंड अफेक्शन बन गया ऑटोमेटिक दोनों के लिए अच्छा है ना ठीक है बेटा क्लियर है ये लिखेगा हम लोग नहीं लिखे ना अभी हाँ चलो पुट साइड सेक्शन 26 लास्ट सेक्शन फॉर द डे एंड लास्ट सेक्शन फॉर हाउस प्रॉपर्टी सेक्शन 26 टाइटल क्या है बेटा को ओनरशिप 2 points will write first point if the property is owned by 2 or more persons if the property is owned by 2 or more persons if the property is owned by 2 or more persons
If the property is owned by two or more persons, then it is regarded as co-ownership. If property is owned by two or more persons, then it is regarded as co-ownership. Correct? Second point. Computation is done. Computation is done as if one person is owner. Computation is done as if one person is the owner. Computation is done as if one person is the owner and then apportioned in the respective share. And then apportioned in respective share. And then apportioned in the respective share. बेटा समझ गए ये बात? Last point. If the property is self-occupied, this word is important. If it's let out, it doesn't matter. You need not play any of this game. क्यों? Limit apply होता ही नहीं ना यार. If the property is self-occupied, then limits will apply. Then limits will apply separately for each co-owner. Then limits will apply separately for each co-owner. That's it, beta. हो गया. Come on. What is section 22? 23(1) let out. 23(2) self-occupied. 23(3) part of the year let out, part of the year self-occupied. Don't tell partly, part of the year, part of the year. 23(4) more than two self-occupied houses. 23(5) stock in trade. 24A standard deduction. 24B interest on borrowed capital. 25 interest payable outside India. TDS किए नहीं तो डिडक्शन नहीं मिलेगा. 25A unrealized rent and arrears of rent. 26 co-ownership. 27 that's it. Are we all clear with this? Yes, sir. Everybody? Yes, sir. Sorry. This is your material. What you got? हाँ है ना आपके पास? In that you have got lot of charts, diagrams and all. दिख रहा है ना? उसमें एक क्वेश्चन है लास्ट में, दिख रहा है क्या? आपको ना ये क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा अभी, आज यहाँ पे. Think properly and do it. Excellent question. 8 marks. मतलब बहुत ही कॉन्सेप्ट है इसमें, सोच के करो बेटा. Just understand the question properly, what they have, data they have given, then you will get a full clarity of thought.
लास्ट 2 minutes. ठीक है, करो. My first question to you. In this question, did you read entire question? Yes, sir. Yes. I'll ask one question. Think properly and tell me. Is there a pre-construction interest? सबसे पहले आपको वो चेक करना है. सर ए का तो नहीं है, बी का है सर, ए का तो नहीं है, बी का देख रहे हैं. सर क्वेश्चन जब भी पढ़ते हैं ना, आपको प्रीकंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट है या नहीं वो देखना पड़ता है सबसे पहले, उसके बाद ही आपको सॉल्व करना है. बोलो, है क्या? किसका है? बी. ए? ध्यान से देखो, ए का भी है, ए का है, बी का है, दोनों का है. आदित्य, ए ने लोन कब लिया बेटा? 1/4/20 को लिया है. खत्म कब हुआ है? तो फिर वो 21-22 में गया ना. तो एक दिन में क्या फर्क पड़ेगा यार, दोनों अलग अलग साल में है ना. जब दोनों अलग अलग साल में है तो प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट आएगा. दोनों एक ही साल में है तो प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट नहीं आएगा. तो पीरियड क्या आएगा? 1 अप्रैल 20 टू 31 मार्च 20. That's it. That's it. Do it. सबसे पहले आप इंटरेस्ट का वर्किंग खत्म करो, उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व करो, अच्छा होगा आपके लिए. पहले इंटरेस्ट वर्किंग खत्म करो, फिर प्रॉब्लम सॉल्व करो. इट बिकम इजी. जब भी क्वेश्चन में देखते ना, पहले ये चेक कर ले बेटा कि प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट है या नहीं है. है तो पहले वो वर्किंग खत्म कर लो, फिर बाकी प्रॉब्लम सॉल्व करो, आपको इजी हो जाएगा. आप सीधा चालू करेंगे, प्रॉब्लम बीच में अटक जाएंगे. डोंट डू दैट. देखेंगे क्या आंसर बेटा? शैल वी सॉल्व? चलो फर्स्ट ए का करते क्या? ए का क्या किया वो पूरा का पूरा? टोटल सेल्फ ऑक्यूपाइड, बराबर है. इसका बेटा बोलो ना, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कितना है? डेट बोलना बेटा. 1/4/20 to 31 मार्च 21. आदित्य तब समझ गए ना भाई बेटा? जब भी आप क्वेश्चन देखते पहले ये चेक कर लो कि प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट है या नहीं है. है तो पहले वो वर्किंग कर लो, उसके बाद बाकी क्वेश्चन सॉल्व करो. कितना है बेटा इंटरेस्ट? कितना है लोन बाय द वे? इनटू विच विल बी 2,40,000. उसके साथ साथ करंट इंटरेस्ट भी आएगा ना बेटा? कितना है वो? 20 लाख का फिर से 12%, 2,40,000. सर बोलो बेटा. Therefore, interest for 21-22 is equal to 2,40,000 plus 2,40,000 divided by 5. समझा ना क्यों करें डिवाइड बाय 5? प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स. कितना है? 2,88,000. So let's do the computation. NAV nil less 24B
I will take only 2 lakhs. My balance answer is 2 lakh. That's it. Mr. A का कहानी खत्म. समझ में आया ना बेटा? I hope you are clear with the story of A. Simple but powerful. But simple but powerful because you have to get that point, you have to catch that point. So clear है ना? हाँ, अभी देखो बी का कहानी देखते हैं. बी का प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या है बेटा? 1720 to 31st March 21. करेक्ट है ना? हाँ, ये पीरियड का इंटरेस्ट कितना है? कितना है लोन उसका? 10 लाख ना? 12% इंटू, अच्छा 12 लाख इंटू 10% है क्या? माई बैड. प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कितना है बेटा? 1720. हाँ, इंटरेस्ट कितना है? लोन कितना है? 12 लाख ना? 12 लाख इंटू 10% इंटू 9/12, 90,000. ये मेरा प्री कंस्ट्रक्शन का कहानी है. करंट इंटरेस्ट कितना है बेटा? 12 लाख इंटू 10%, वो हो जाएगा 1,20,000. यार बोलो ना यार, टोटल इंटरेस्ट कितना हुआ? 1,38,000. बिकॉज 90 को डिवाइड बाई 5 करेंगे ना. क्लियर है? अभी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. चलो, बी का बेटा आधा सेल्फ ऑक्यूपाइड है, आधा लेट आउट है. बराबर है यार? बोलो ना यार. चलो, सेल्फ ऑक्यूपाइड का क्या होगा? सीधा एनएवी बनेगा नील. लेस 24B लेंगे हम 69,000. नेगेटिव आंसर आएगा 69,000. हो गया बेटा बी का सेल्फ ऑक्यूपाइड का कहानी? यार बोलो ना यार. नाउ द रियल गेम बिगिंस. सर इसमें ये लिखा है ना, ए और बी का प्रीवियस ईयर का निकालना है. कौन सा प्रीवियस ईयर बोल रहे हैं? कंप्यूट इनकम फॉर हाउस प्रॉपर्टी ऑफ ए एंड बी फॉर प्रीवियस ईयर. करंट ईयर AY 22-23 के लिए टैक्स हाँ. हुआ था, तो वही है. करेक्ट है ना? दोनों एक ही होता ना यार. अब जब पीरियड 2022 बोलेंगे या आईवे 2023 बोलेंगे, मीनिंग तो एक ही हो गया ना. डन. चलो बेटा, लेट आउट का क्या कहानी बेटा? नाउ टेल मी. सुनो, डोंट राइट एवरीथिंग नाउ. 2 minutes वेट. 2 minutes. सुनो ट्विस्ट क्या है क्वेश्चन में. म्युनिसिपल वैल्यू कितना है बेटा? 72,000 पर आनम पर यूनिट. पर यूनिट है ना वो, तो कितना लू मैं? 72,000 इंटू 9/12. क्यों? वेकेट का नहीं भैया, घर है ही 9 महीने के लिए. कंस्ट्रक्शन एक साथ को खत्म हुआ है. when घर is only for, I mean when house is only there for 9 months, how can you take municipal value for 12 months? और वो 3 महीना वेकेट कर दो भी सेल्फ ऑक पे कर लिया उन्होंने. वो खाली नहीं है, वेकेटेड नहीं है वो 3 महीना सेल्फ ऑक पे कर लिया खुद. सो देयर इज नो वैकेंसी देयर. यार बोलो यार. समझ में आया बेटा? कितना है? 54,000. बराबर ही है. फेयर वैल्यू कितना है? इंटू 9/12 कितना? 75,000. स्टैंडर्ड रेंट कितना है? नहीं है क्वेश्चन में? नहीं है तो नहीं है. तो व्हाट इज माई एक्सपेक्टेड रेंट? एग्जैक्टली. व्हाट इज माई रेंट रिसीव्ड? 15,000 इंटू 6 months. बराबर है ना? 90,000. समझ में आ रहा है बेटा? सो माई GAV विल बी 90,000.
So if my GAV is 90,000, I will reduce municipal tax. कितना? 4,000. Don't dare to tell 8,000. Less 24A. कितना बेटा? करो बेटा, कितना आ रहा है? फिगर बोलो ना मुझे. 25,000. 24B लिखो मत 2 मिनट. 24B 69,000. शायद नेगेटिव आएगा ये. कितना नेगेटिव? 8,800. So my answer is 77,800 negative. I'm sure you like the question. ये क्वेश्चन में प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट भी है, 9 months का कॉन्सेप्ट भी है, और सेल्फ ऑपरेट भी है, लेट आउट भी है. सच अ ब्रिलियंट क्वेश्चन इट इज. करेक्ट नो? चुन्नू मुन्नू करते बैठेंगे तो क्या मिलेगा यार? कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ खुशी मिलेगा करते वक्त, एग्जाम में नहीं. That's all. That is the story for today, and that's the end of story for this beautiful topic called income from house property. So we're done with basics, residential status, agricultural income, house property. Tomorrow we'll spend time on 1-2 small areas like clubbing, set off and all, and after that we'll directly jump to income from capital gains. Most interesting and most amazing topic. ठीक है ना? बट कल थोड़ा रिलैक्स करते, विल टॉक क्लबिंग सेट ऑफ. रिलैक्स मतलब ये नहीं है कि उसमें से कुछ भी नहीं आएगा. बहुत बार सेट ऑफ आ रहा है एग्जाम में 6 मार्क के लिए, और क्लबिंग में भी बहुत सारे स्पेशल पॉइंट्स है जो समझना बहुत जरूरी है. ठीक है ना? डन. थैंक यू सो मच. थैंक्स फॉर योर कोऑपरेशन ऑन दिस संडे, दैट टू सिटिंग फॉर लॉन्गर टाइम. थैंक यू. आई नो यू हैव नॉट हैड योर लंच ऑल्सो. आई ऑल्सो नॉट हैव अ लंच. नो प्रॉब्लम, चलता है, अपने लिए कर रहे. ठीक है ना? थैंक यू. बाय बाय.